minute. So let me start this recording. So basically in French we have three type of verbs. One is we have er ending verb, one is ir ending verb, and one is r ending verb, right? So what's the formula of er ending verb? Tell me the formula of E, e e s E, e S, E, o n s O, o N, n S, s E, e Z, z e n t. Okay. E, N, T, Yes. And what's the formula of ir ending verb? I S I I, S S, I I, T S, I, I T, T I I, S S, S O N S, S S, O, N, S, I I, S, S S, S E, Z, E Z and I S S I, E S, N S, T. E, N, Okay. Now what is the formula of R E ending verb? The formula of R E ending verb is S S blank O N S E Z and E N T. Now for example, if you have verb descendre, descendre is my verb to get down. Repeat after me. Descendre. Repeat after me. Dishonor, Yes, descendre. dishonor, Yes, descendre is my verb to get down. Repeat after me. Descendre. So if I will say, dishonor. I get down, you get down. So what we will do? So we have a formula over here, okay, in the present tense. So we will say, because we have a formula of what? I have to eliminate RE and I have to insert a formula of SS blank ONS EZ ENT. So what I will do with this? I will do je descends. Why je descends? Okay, I can do it over here. See over here, understand the ending please. SS blank. So over here we have an ending S. Over here we have ending S because we have to eliminate RE. Stay clear. And over here we have a blank. It means no ending. So when once we'll remove RE from the end, so we only left with DESCEND. So we can insert DESCEND. Stay clear? D'accord? Why? We, sir, we, So je descends, we cannot say descends. No, because S would be silent. S is So I silent. will say je descends, tu descends, il, elle descend, nous descendons. Répétez après moi. Nous descendons. Vous No descendez. dishondo, Vous who descendez. disonde, And il, who elle, disonde. yes, il, elle descend. C'est clair? D'accord? We, sir, Alright. Alright. Now, um, I will explain to you a lot of things today. Now, par exemple, vous avez le verbe prendre. to take, Prendre. Repeat after me. Apprendre. Repeat after me. Apprendre. prendre, Repeat after me. Comprendre. If you will understand comprendre. this, we have an ending of prendre. Prendre is common and prendre is common. Is it clear to you? So first, if I We, know the formula of prendre, I can make these two verbs also. So basically, prendre is my verb to take. Prendre is my verb to take. So take, repeat because that's an area ending verb. So S blank blank, O O, N N, Z S, E Z E N T. Is it clear E, to you? N, T. So what I will do with this? I will do je prends. Repeat after me. Je prends. Je prends, Okay. Tu prends. Tu tu prends, prends. Is prends, it clear to you? Okay. Tu prends. Okay. Okay. Il, elle prend. il, elle prend, Okay. Il, elle prend. C'est clair. Nous prenons. we, We cannot say nous nous prendons. prenons, We say nous prenons. Nous nous prenons. prenons, Okay. Vous prenez. D'accord. vous Vous prenez, prenez. And ils, elles prennent. Ils, elles prennent. Now répète après moi. Je prends. Tu prends. je prends, tu Il, prends, elle prend. Nous prenons. il, elle prend, Nous nous prenons. prenons, Vous prenez. prenez, Elles prennent. il Non, prend. s'il vous plaît, répète après moi. Je prends, tu prends, il, elle prend, Je prends, tu tu prends, prends, il, elle il, elle prend, prend, nous prenons, prend, vous nous prenez, prenons, vous il, prenez, elle elle, prennent. D'accord? elle prend. Now, Oui, par sir. exemple, nous avons le verbe apprendre. Apprendre is my verb to learn. But
One thing you have to understand, apprendre is a verb to learn, but one thing learn, right? But one thing you have to understand over here, apprendre. So we have prendre, okay, prendre. So we have a same ending, you know, prano, prane, pren. Same we have apprendre also. It is just we have to insert ap because that's starting from ap. We have a prendre over here. So what I will say, I will make the formula of je apprends. But over here we have what? One vowel, Two vowels. eliminate. So what I will say, j'apprends, because we Most have to combine the sound. J'apprends. Ending is PRENDS. PRENDS. It is just we have to insert AP because we're starting from AP. C'est clair? we sir. J'apprends. Tu apprends. Répète après moi. Tu apprends. C'est clair? Tu apprends. Oui Il, sir. elle apprend. C'est clair? Elle apprend. Nous apprenons. Nous Nous apprenons. apprenons. C'est clair? Okay. एक second. Nous apprenons. Please. 1 second, please. 1 second, yeah. Et nous apprenons. Vous apprenez. Vous apprenez. Apprenez. And elles apprennent. Elles apprennent. Apprennent. क्योंकि we have PRENNENT, right? elles apprennent. PRENNENT. So it means I will say j'apprends is to I learn. Tu apprends is to we learn. Il We apprend, learn. he learns. Nous apprenons, we learn. Vous apprenez, ils apprennent. C'est clair? D'accord? Now, par exemple, vous avez le verb comprendre. Comprendre is a verb to understand, right? अब चलो आप बनाओ comprendre verb को. Same conjugation है. It is just we have to insert com. So prendre, you know, prendre, what is the formula of prendre? PRENDS, because that's an RE ending verb. So tell me what it could be. Je comprends. Comprends. Je comprends. C'est clair. Is it clear to you? Oui sir. Je comprends. Okay. Tu, tu comprends. C'est clair. D'accord. Oui Il, sir. elle comprend. C'est clair. Il, elle comprend. Comprends. C'est clair. Nous comprenons. Nous comprenons. C'est clair. D'accord. Vous comprenez. It is just we have to insert vous because comprendre, prendre, apprendre, c'est le même, c'est le même mot. Prendre. C'est clair. So vous comprenez. Il, elle comprennent. Il, elle comprennent. C'est clair. So je comprends, tu comprends, il, elle comprend, nous comprenons, vous comprenez, il, elle comprennent. C'est clair. Tell me yes or no. Is it clear to you? Oui sir. Sure. Now, I will give you today a different portion of the French language. You know what? Basically, we have a family in French language. Very important to understand. We have a family in French language. Now, for example, okay, for example, we have two things over here. Now we have two things over here. One we have être family verb. Repeat après moi. One we have être family verb Family and verb. one we have our family verbs. देखो ध्यान से मतलब बहुत important है ये topic. Basically, my French.
It's totally based upon two families. Now repeat after me. My friend is totally based upon two families. One is être Friend. and one is avoir. Say Claire. Uh, So basically, we my sir. French is based upon two families, être and avoir. C'est clair. D'accord. Tell me yes or no. Why? We sir. Why? So if I asked you, what is the formula of être verb? What you will say? Je suis. Okay. Je suis because être is my verb to isma to be. Être is my based upon is mr. So basically, literally translation of être because we have e. E we have a sharper over here. Okay, let me take you to a different whiteboard, then you will come to know. One second. Okay, this thing. So basically, we have two type of verbs in French, which is very important. One is être and one is avoir. And I will explain to you a lot of things today. Okay. So être, because we have a hut over here. Être. Être is my verb to be. So basically, my être meaning is mr. We call it as to be. So my ismr verb belongs to, that is my, if I say ismr verb, that is my être. Is it clear to At you? Okay. we. So if we have avoir, if we have avoir, it means this is has and have. If we have avoir, this is has and have. So basically we have two type of verbs. One is être, repeat after me. One is être, which is ismr, and one is avoir. Say Claire. Avivar. So repeat after We. me. So one is être and At one is avoir. Is Avivar. it clear to you? Clear? So my French is based upon lot of verbs. Être is my verb to is mr. Avoir is my verb to has have, right? Have. My second verb, which is based upon aller. Aller is my verb to go. My Go. French is, yes, these are my French, because the basic conversation of French is based upon être, avoir, aller, which is very important. My second verb is based upon venir, which is my verb to come. You know what? I will explain to you how my French is based upon these verbs. Yes, it is very, very important. So, être, répète après moi. Être, avoir, aller, Var. venir. Ale. Venir. So, être is my Vanir. verb to is amar. Avoir is my verb to has have. Ali is my verb to go. And venir is my verb to come. Is it clear to you? Come. We. Now, obviously, evidamo, we have a conjugation of être verb. Okay, right? Evidamo, we have a conjugation of avoir verb, right? Evidamo, we have a conjugation of ale verb. Evidamo, we have a conjugation of venir verb. So let's wrap up these. Now, what are the conjugation? Now, for example, we have a verb être. Okay, so basically, we have être verb is to be, right? So what we will do? Repeat after me. Je suis, because obviously, whenever I will break être and I'm going to convert I am, that is je suis. Just QA, we. QA. UA. Because if I will UA. say you are, that is because, yeah, this is the verbs which you have to learn by heart. So être is my verb to ismr. The moment I will break the verb with my ismr like I am, you are, he, she is. So je suis, tu es, il, elle est, c'est clair. Nous We. sommes, ये करना है आपको. We are, vous êtes, ils, elles sont. Now repeat after me, please. Être belongs to my ismr verb. मैं क्यों repeat करूं? Because this is very important topic. So être belongs to my ismr, right? So the moment I want to convert être verb with ismr, so what I will do? Je suis, tu Just es. we. Repeat after me. UA. Je suis is to I am. Tu es is to you are. Il, elle, est is to he, she is.
Nous sommes is to we are. Vous êtes is to you are. And ils ont is to they are. Now repeat after me, please. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Speak up, please. Nelson. बोलो उसको, please. Just with you a LLA, no tom, who's at LLC. Declare. Just Now we have we our verb. move Declare, Sumanta on. madam. Yes, sir. Now we have our verb. Our is about to has have, right? So how we can conjugate? Repeat après moi. J'ai is to Yeah, I have. Yes. J'ai, tu as, okay. You are. You are il a. देखो ये क्या है, मेरा आवर एक फुल वर्ब है मेरा। मेरा फुल वर्ब जो है मेरी वो आवर की है, फुल वर्ब। लेकिन जब मैं कन्वर्ट करूंगा आवर को, यू नो, आई हैव, यू हैव, ही शी हैज, राइट? सो आई विल से j'ai, tu as, il elle a, nous avons, c'est clair, Bravo. nous ok? avons, Vous avez, c'est clair, vous avez, L. ils elles ont. elles ont. Now répète après moi. J'ai, tu as, il elle a, nous avons, vous avez, ils elles ont. C'est clair. Elles, No, elles, yes, zone, yes. So repeat after me. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. J'ai, tu as, il a, il, elle a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. No, repeat it, please. Repeat it, please. सर ये लास्ट सौ है या सौ है? Zone, zone, zone. Because S and O का sound क्या है? Zone. And that is song. Zone. Claire? Okay. D'accord. Okay. So now repeat after me. Je suis, tu es, il, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Speak like this. बोलो, j'ai, tu as, il, elle a. Nous sommes, vous avez, ils, elles ont. बोलो इसको आप ऐसे करके. बोलो. Speak up, please. j'ai, tu es, elles a, nous avons, vous avez, elles ont. Is clear? D'accord, Smolta madam. A Namish. Is it clear to you? Yes, sir. Yes. Why? So now we have a verb, ale. Ale is a very important verb to go. Again, these are, you know, these are verbs wherein we have different endings the moment we conjugate. अब जैसे मेरा verb है ale, right? This is not conjugate with ear ending verb. We cannot say e, es, e, no. Yes. Because we have different ending. I will say je vais. Répète après moi. Je vais. Tu Okay, vas. Yes. You. Je vais. Well, Tu vas. Il, elle a. elles a, One sec, please. One sec, please. Yeah. Okay. Je vais. Tu vas. Il, elle va. Okay. Zalo. No. Yes. Nous allons. C'est clair. Vous allons, allez. I was just Vous getting a allez. phone call. Yeah, I'm just getting a phone call. Please be online. Yeah, I'm just getting a phone call. Yeah, give me 2 minutes. Yeah, okay. sure, sir. Okay, all right. Now speak up, please. Ali is my verb to go. Ali. Okay. Ali is my verb to go. Now repeat after me, please. Je vais, tu vas, il, elle Je va, vais, tu tu vas, vas, il, elle va, va, nous allons, va, nous allons, vous allez, nous allons, vous ils, allez. elles vont. Now repeat it, please. Je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, elles vont. Yes, exactly. So, aller is my verb to go. So if we say je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Now repeat it like this. बोलो इसको आप. Je vais, tu vas, elles va, nous Nous allons, allons, vous vous allez. allez, ils, elles vont. Sit right here. हाँ, Because you know, interest लेके हमें इसको करना है because these are verbs which we have to learn by heart. So one need is my verb to come. So what I will say. Because these are different ending, yeah. Different ending which you have to do it. So one need is my verb to come. So I will say je viens. Repeat after me. Je Je viens. Tu viens. je je English. viens, Je viens is to I come. Tu viens is to you come.
Il vient is to he, she comes, right? Nous venons is to we come, okay? Vous venez is to you come. C'est clair, d'accord? And Oui, sir. il, elle, viennent. Is it clear to you? Okay. Now repeat Yeah. after me, please. Repeat it, please. सर एक क्वेश्चन है, हाँ, बोलो. हम अगर एलए में से ईआर हटाएंगे तो जब हम प्रेजेंट टेंस में जाते हैं तो हम एस ई एस इसके Yes, आगे ही लगा, exact mo. But, ये but, क्या है मैं, फिर? yes, because we have because in French we have two type of verbs. One is regular verbs wherein you have formula and you can say es. That's a regular. You are doing it right. You are in your regularity. But there's some verbs wherein we have a different ending that we call as irregular verbs. So these are my irregular verbs. Normal सी बात है, ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका डिफरेंट फॉर्मूला होगा. जैसे आले है, वनीर है, आवर है, एत्र है, राइट. वी कैन नॉट से एल एल ई आर और मैं ई आर हटा के यहाँ पे ई लगा दूं, बोलूंगा जाल. नो, जाल कोई वर्ड ही नहीं है हमारे फ्रेंच में. से क्लियर, d'accord. तो सो फिर इसी, कहाँ यूज, तो फिर, ये जैसे हम जो हमने वर्ब की, किसी में से आई आर हटाया, किसी में से ई आर हटाया, तो उनमें हमने ई ई एस या आर आई एस इस तरीके से लगाया था, होंगी वो उनके साथ यही, यूज नहीं होंगी? ना ना ना, यही तो प्रैक्टिस है. मैं आपको एक सेग्रीगेट दे रहा हूँ कि देखो कल हमने रेगुलर वर्ब करी थी, कल सब में हम एंडिंग लगा रहे थे, बट आज किसी वर्ब में हम एंडिंग लगा ही नहीं रहे हैं. क्योंकि यही एक हमारी प्रैक्टिस है कि हमें प्रैक्टिस करनी है कि वनीर इज माय वर्ब टू कम. आई कैन नॉट से य वनी, बी ई एन आई एस, वो गलत हो जाएगा. य वियो होगा हमेशा. बिकॉज क्या होता है, अगर मैं बोलूँ नाइफ, के एन आई एफ ई, इफ आई विल से काइट, के आई टी ई, माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाई इट्स नॉट अ नाइफ, व्हाई इट्स नाइफ. अब लोगों, दैट्स अ रूल. एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल हर एक वर्ब्स में होती है, हर एक लैंग्वेज में होती है आपकी एक्सेप्शनल. वर्ब के अंदर क्या कह रहे हो? सर, ये एक्सेप्शनल वर्ब है हुई ना वर्ब के हाँ, अंदर? यस, ये हमारी ना एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं. बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे मेरी एक वर्ब है, देखो, we have one verb savoir. We have one हम्म, verb savoir. अब ये savoir is my ironing verb, but I cannot use the formula of ironing verb. No, I can say savoir is a verb to know, because both ऐसी ना हमारी 11-12 verbs हैं मेन, जिनकी हमारी different endings हैं, जो कि मेरी exceptional verbs हैं, right? So if we have verb of savoir, I will say, देखो अभी मैं आपको वर्ब्स की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ काफी टाइम से. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पैटर्न थोड़ा सा इजी नहीं है और स्टार्टिंग में इसमें दिक्कत आती है, बट आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यू हैव अ लाइव सेशन विद यू, राइट? सो मीटिंग विल बी एंड इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. जैसी मीटिंग एंड होगी आपको मैं नया लिंक भेजूंगा, राइट? सो just say savoir is my verb to know. Just Chandan, हम्म, mademoiselle, we cannot say ir verb or I will say SAVOIS. No, no. These are something like we have a verb savoir is a verb to know. I will say je sais, tu sais, il, elle sait, nous savons, c'est clair. Vous savez, c'est clair. And il, elle savent. Now repeat après moi. Je sais, tu sais, il, elle sait. Nous sommes, vous savez, il, elle savent. Repeat like this. Repeat like this. Je sais, tu sais, il, elle you sait. say il say no sab. ये पता है क्या है? हम्म, आपको एक सॉन्ग लेके आना है अपने मन में. You be like a singer in this verbs. Practice करना है. Je sais, tu sais, il, elle sait. Nous savons, vous savez, il, elle savent. Because these are the verbs which is you have to learn by heart at any cost. Stay clear. D'accord. Okay. Now, for example, देखो वनीर मेरी एक verb है, is to come, right? अगर मैं देखो एक मेरी verb और है द वनीर. देखो है तो वो भी वनीर ना, जैसे हम लिखे थे प्रोंद्र, आप्रोंद्र, प्रोंद्र प्रोंद आ रहा है, कॉम्प्रोंद्र. ऐसी देखो वनीर इज माय वर्ब टू कम एंड द लग रहा है आगे, पर वो वनीर, द वनीर, द वनीर इज माय वर्ब टू बिकम. The moment you will conjugate the veneer verb, we have a same ending. We have a same ending with veneer. Veneer is bien, तो य the bien. Say clear. Tell me yes and no. ओके, Say clear.
So what's the meaning of davenir? is to become. Davenir is my verb to become. नहीं दिख रहा आपको? लिखा हुआ become दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर. हाँ जी हाँ जी. Okay, je deviens, tu deviens, c'est clair, d'accord? elle devient. आपको पूरा टास्क भेजना है, जो ये हम जो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग उठा उठा के आपको टास्क भेजना है. क्लियर? nous devenons, vous devenez, il, elle deviennent. C'est clair. Now répétez après moi. Je deviens, tu deviens, il, elle devient, nous devenons, vous devenez, il, elle deviennent. C'est clair. Répétez après moi s'il vous plaît. Je deviens, tu Je deviens, deviens, tu tu deviens, deviens, il, elle tu devient, deviens, nous, il, elle devient, nous devenons, ok, nous devenons, vous vous devenez, devenez, il, vous elle devenez, deviennent. C'est clair. il, elle deviennent. Oui. Why? Let's do one thing. अब आपको मैं एक डिफरेंट वर्ल्ड की ओर लेके जाता हूँ फ्रेंच में. सारी वर्ब्स को मिक्स करते हैं एक बार. लेट्स से कि आपको कितना समझ आता है वो. से क्लियर, d'accord? Can we play a game? Okay, let's play a game. आपसे मैं एक नोटपैड शेयर कर रहा हूँ, राइट? 1 सेकेंड. अब ये आपको बताना है. मैं हर एक से पूछूंगा. आप बस 10 सेकेंड्स होंगे आपके पास बताने के लिए आपको. ठीक है? I will give you 10 seconds and you have to convert the verb. Okay, let me share the screen. आपकी स्क्रीन दिख रहा है? Je regarde. अब देखो je regarde है, right? Regarde is my verb to look, to watch. लिख लो प्लीज. Regarde is my verb. दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है आपको? कुकू दिख रहा है आपको स्क्रीन? Bonjour. Yes, sir. हाँ, Yes, yes, sir. Yes, Okay. sir. So regarde is my verb to look and watch, right? अब je regarde है, je regarde. Tell me how will, what is Namish? What is the conjugation with je? Regarde है is to watch, running verb. Tell me what is the conjugation? Je regarde, tu regardes, il ना regarde. खाली je के साथ बताना है, je के साथ. So, like we remove the r. Yes, we will remove er and will insert e. Very good. Now, Chandan, mademoiselle, tu manger. Manger is my verb to eat. लिख लो आप. Regarde is my verb to look. Okay. Okay. And manger is my verb to eat. Okay. So tell me, with you, what you can do this. manges. Very good. So tu mange. Okay. Now we have Tu manges. voyager. Look, voyager is my verb to travel. Voyager is my verb to travel. Now, Namata madam. Okay. Tell me, with il, what you can do. This is an e-running verb. सर क्या? थर्ड है ना, थर्ड वाला, उसको कॉन्जुगेट करो. इल के साथ क्या लगाओगे? voyager verb है ना. Voyager is my verb to travel. Right? आर हो जाएगा सर. Very good. So we have il voyage. क्या हो जाएगा? Il voyage. voyage. Okay. Now, préférer is my verb to prefer. लिख लो आप, so jot down करो इन vocabularies को. Préférer is my verb to travel, right? Sorry, prefer. Okay. Tell me what you can do. Nu के साथ Namish. Préférons. Yes, ONS, préférons. like ONS लग जाएगा. Very good. So préférer is my verb to prefer. Okay. Is it clear to you? Okay. So now we have écouter. Écouter is my verb to listen. Listen. écouter लिख लो पहले इसको vocab को लिखो अपने नोटपैड पे. écouter
इसमें verb to listen, right? Listen. Okay, is it clear to you? Hmm. So We say what you will do? Ekute, ENT. yes, ent, right? Now we have finir with finir. Nu के साथ क्या लगाओगे? Tell me, what would we nu with finir? Ironing verb है ये. ISS. Yes, Yes, finissons, very good. No, finissons, very good. Now we have a Finish. next is choisir with vous. What you will do? Namat, Swanta mademoiselle, madame. Choisir with vous. वजीर विद वो यहाँ पे आएगा फिनिशे Choisisse, डबल yeah, choisisse. क्या आ जाएगा? Choisisse, CHO, very good. Rougir, pourquoi rougir tu? अब तू के साथ लगाना है. तू rougir. तू के साथ क्या लगोगे? Ironing verb है. क्या लगोगे? Tell me. IS. Yes, yes, very good. Is it clear to you? Is it clear to you? So rougir Yes, is sir. my verb to blush. हमने कल किया था. These are the verbs. Rougir is my Yes, verb sir. to blush. Is it clear to you? Blush. Now we have a verb jaunir. Jaunir is my verb to पीला पड़ जाना, something like something like this. Okay, yellowish. Okay, jaunir. Is it clear to you? Why? अब बताओ, ये प्लूरल है, ये लोग प्लूरल है ना, तो क्या लगाओगे आप? Yes, sir. क्या लगाओगे? Tell me. ISSENT. तो tell me the spelling. क्या लगाओगे? ISSENT. SENT. पूरा spelling बताओ. Jaunisse. JAUNISSENT. Yes. Is it clear to you, Thakur? Now 10th. सर ये की वजह से लगा है क्या बोल रहे हो? ये जो ISSENT लास्ट में जो हमने लगाया है ये ले की वजह से लगा है LES की वजह बिकॉज से बहुत सारे लेफाई जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ गई. फाई, फाई इज योर लीव्स. फाई, फाई जो है ना, लेफाई. फाई इज, आई विल एक्सप्लेन टू यू द और वोकैबुलरीज. यस, ये बिकॉज ले है. वेरी गुड. अब देखो, रियोसीर. फिश आपका होता है, फिश सन होता है, सन को बोलते हैं फिश, FILS. सन है तो इल एक नाउन है, ये कॉन्जुगेट होगा नाउन के साथ, इल के साथ सन है. तो यहाँ पे क्या आएगा रियोसीर में? कल हमने किया था, इल के साथ क्या लगाओगे आप? IT. REUSSIT. Yes, IT. Is it clear to you? Now we have la mayor. Mayor is your mayor. So mayor, जो mayor of the city होता है, city of the mayor the administration department होता है, mayor. In English we have mayor, है ना? Mayor, city of the mayor. अच्छा, वो एक noun है, ठीक है? Rondre. So what you will do? Are ending verb है? Tell me. as it is right Yes, as it is रहेगा, तो क्या आ जाएगा? REND. Is it clear to you? Say Claire. Okay. Wait, sir. Now I will give you now